अब हम लोग थ्योरम 1.2 को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम 1.2 जो है ये डिवीजन एल्गोरिथम है। इस प्रूफ का नाम क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम। इस थ्योरम का नाम क्या है? सॉरी, इस थ्योरम का नाम क्या है? डिवीजन, द डिवीजन एल्गोरिथम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? गिवन एनी इंटीजर्स a एंड b, कोई भी दो इंटीजर्स a एंड b है विथ a इज पॉजिटिव, there exist unique integers q and r such that b is equal to qa plus r, where 0 is less than or equal to r is less than a. और इसी में कह रहा है if a does not divides b then r satisfies the stronger inequalities, 0 is less than r is less than a. अब हम लोग द डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव करते हैं। तो ये ले रखा है a is a positive. Now proof of this theorem. Proof of this theorem. हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर द arithmetic progression that जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है b है, b प्लस a, b प्लस 2a डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक डॉट हो जाए। b माइनस a, b माइनस 2a, b माइनस 3a, इधर भी इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट। ये कंसीडर द, हम लोग एक एपी कंसीडर करे हैं, बी प्लस ए, बी प्लस 2a, बी माइनस ओ, बी माइनस 2a जो भी है। हम लोग इन दिस सीक्वेंस, जो भी ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इन दिस सीक्वेंस this sequence we select the smallest non-negative members। इस सीक्वेंस से हम लोग स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे। वी से दैट, हम लोग उसको बोलेंगे आर, से आर। सो बाय डेफिनेशन आर सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटीज। बट जो आर है, बट ऑल्सो आर बीइंग इन द सीक्वेंस, बिकॉज आर हम लोग इस सीक्वेंस से, इस एपी से ही ले रहे हैं। सो ऑल्सो आर बीइंग इन द सीक्वेंस, बीइंग इन द सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस में कैसे फॉर्म्स के हैं? एपी बी प्लस ए, बी प्लस 2a, बी माइनस a। सो बट ऑल्सो आर बीइंग इन द सीक्वेंस इज द फॉर्म, जो आर होगा इज ऑफ द फॉर्म, बी माइनस क्यू ए। बी माइनस क्यू ए के फॉर्म में क्यों होगा? बिकॉज इफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बी प्लस ए, बी प्लस 2a, ये आर जो है स्मॉलेस्ट उसके इसमें नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग लिए हैं बी माइनस क्यू ए। दस हमारा जो
Q है वो डिफाइंड है, हो गया इन टर्म दस Q is defined in terms of R, मतलब that is R is equal to minus QA plus B. This implies B is equal to QA plus R. R क्या है? नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो R नॉन नेगेटिव मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू R। नॉन नेगेटिव नंबर्स से R ये लेस देन ए होगा। लेस देन ए क्यों होगा? क्योंकि जो R हम लिए हैं स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स है। सो यहाँ तक हो गया R इज लेस देन ए। अब हम लोग एग्जिस्टेंस तो कर दिए, हम लोग इस फॉर्म में दिखा दिए। अब हम लोग यूनिकनेस दिखाएंगे, यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। अब हम लोग दिखाएंगे यूनिकनेस यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। सपोज कर लेते हैं, सपोज यूनिकनेस प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी मतलब क्यू और आर को, तो क्यू और क्यू वन लेंगे, उसको दोनों को इक्वल दिखा देंगे, वही बोला। सपोज देयर इज suppose there is another suppose there is another pair of q1 and r1 satisfying the satisfying the satisfying the same conditions means a is equal to sorry b is equal to a q1 plus r1 and b is equal to a q plus r, where r and r1 lies between 0 and a and also b equal to 0. So suppose there is another pair of Q1 and R1 satisfying the same conditions. Now we are we prove that firstly we prove that firstly we will prove that we prove that R1 is equal to R1 R. Now let us assume let us assume R is less than R1. This implies 0 is less than R1 minus R is less than A. Why R1 minus R is less than 1? Because R is less than A, R1 is less than A. This implies R1 minus R is also less than A, because these two numbers are less than, then the difference is of course less than A. So R1 minus R is less than A. And since
Since B is equal to AQ plus R and B is equal to AQ1 plus R1, then R1 minus R1 minus R is equal to AQ minus Q1 in subtracting above two conditions. This implies by the definition of divisibility Q minus Q1 divides R1 minus R. But this is contradiction. Why contradiction? Because we know we we prove that we proved in the previous lecture that if क्या कहते proof if A comma B if both A and B greater than 0 and A divides B implies A is always less than or equal to B. We proved in the previous lecture. Now compare to this theorem in here. Since Q since R1 minus R is greater than 0, since R1 minus R is greater than 0 and since R1 minus R is greater than 0, sorry, here A divides Here A divides R1 minus R. If A and B is greater than 0 and A divides B, this implies since R1 minus R is greater than 0 and A is also greater than 0 and R1 minus R is and A divides R1 minus R, this implies A is less than or equal to R1 minus R. Since here this is contradiction, so it does not divides R1 minus R. This implies our assumption is wrong. Similarly we will prove for R R1 is less than R. Similarly proceeding this step. This implies R1 is equal to R. Now we will prove for Q. Now we will prove Now we will prove Q is equal to Q1. Let us assume Q is less than Q1. This implies AQ is less than AQ1. Also, this implies B minus AQ is less than B minus AQ1. This implies R is less than R1. Here R is less than R1. From proceeding above step, we prove that
Q is equal to Q1। Hence, फाइनली हम लोग प्रूव कर दिए हैं कि जो Q एंड R होता है वो एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर दिए और यूनिकनेस भी। अब हम लोग जीसीडी के तरफ बढ़ेंगे। जीसीडी का डेफिनेशन क्या होता है हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे ये दिया हुआ है, वी हैव स्टार्टेड द थ्योरम विथ assumption a is greater than 0। हम लोग ऊपर लेके चले थे a is greater than 0। However, this hypothesis is not necessary and we may formulate the theorem without it. Given any integer a and b with a is non-zero, then there exist integers q and r such that b is equal to qa plus r, where 0 is less than or equal to r is less than mod a. Now we will recall the greatest common divisor। ये क्या होता है डेफिनेशन 1.2। The integer a is a common divisor of b and c। हम लोग अब पढ़ेंगे कॉमन डिवाइजर का डेफिनेशन क्या होता है। तो the integer a is a common divisor of b and c in case a divides b and a divides c। यदि a डिवाइड्स करेगा b को और a डिवाइड्स करेगा c को, तो हम लोग बोलेंगे a is the common divisor of b and c। Since there is only a finite number of divisors of any non-zero integer, there is only a finite number of common divisors of b and c, except in the case of b is equal to c is equal to 0। यदि b और c 0 हो गया तो वहां पे हमें कॉमन डिवाइजर्स इनफाइनाइटली मिल जाएगा। So, if at least one of B and C is not 0, the greatest among their common divisors is called the greatest common divisor of B and C, and this is denoted by, इसको बोल सकते हैं order pair के B and C। Similarly, we denote the greatest common divisor Z of the integers who are not all 0 by this। Thus, the greatest common divisor BC is defined for every pair of integers B, C, except B is equal to 0 or C is equal to 0। We note that जो GCD of B and C है वो always greater than or equal to 1 होगा, because 1 तो GCD सभी integers का होता है क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है। यदि ये निगेटिव हुआ तो इसका जीसीडी जो होगा वो मॉड में आ जाएगा। सो जीसीडी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम 1.3 प्रूव करेंगे। इफ g is the greatest common divisor of b and c, then there exist integers x0 and y0 such that g is equal to gcd of b and c and is equal to b x0 plus cy0। सो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।